Supplier's work is supplier who supply the goods, and service for cash or credit. Next is customer. Customer who buy goods or service for cash and credit. তারপরে হচ্ছে এমপ্লয়ি who provide services who provide services in exchange of salary or wages. Then next is banks with whom accounts are maintained. Then suppliers, it supplies equipment, it supplies equipment, buildings, supplies equipment, building, other assets needed to carry on business. Then lenders are financiers. Lenders, or you can say financier. From whom you borrow money to finance your business. Then investor who hold a share in the capital of your business. So these are the following accounts that were maintained. One is our real accounts, personal account, and nominal account. If you check the real accounts, it is a building, cash or furniture. Okay.
and personal account like customers, lenders or suppliers. Nominal account that you are giving a expenses ଯେମିତି କି ଆମେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା salary ଦେବା ସେଇଟା ହେଉଛି nominal account। ଆଉ personal account ଯୋଉଟା ତାର ନିଜର ଥିବ। real account ଯୋଉଟା କହିବ ଆମେ ଯୋଉ building ହବ କିମ୍ବା furniture ଯୋଉ ଆମେ assets ଯୋଉଟା ସବୁ କହିବା ଆ ଭିତରେ ଯିବ real account। The account can be broadly classified under the following five groups. One is asset, the valuable thing owned by the business that can be expressed in the monetary term. Okay. जो भी हमारा बिजनेस रे जो सब जिनिस सब दरकार बिल्डिंग को हमें रेंट रे नबा किबा अलगा जो एसी लगेगा ये सब हमारा एसेट्स रे। Liability, the obligation or debts payable by business in the future in the form of money or goods. तापर कैपिटल जोटा रोचे एटा होचे कैश इन हैंड, कैश एट हैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, all part of the company is called as the capitals. Revenue is what means after selling the product, okay, the amount that you are getting inclusive your base amount and product amount plus तमरा profit जोड़ा थिबा सेटा हमें कहिबा revenue। Expenses the cost incurred by the business, so business का profit पाया पे जहाँ भी मैं expenses करी that is a expenses समझे थिबा। So right, this accounts can be classified into five groups. Accounts classified in five groups. First is assets, the valuable things owned by a business that can be expressed in monetary terms. Valuable thing owned by a business that can be expressed in monetary term. Then liability, liability is what? Like we can say it is a loan type of thing. Okay, so it is a obligations or loan payable by a business in future in the form of money or goods. Then capital, cash in hand, cash at hand, building, plant or furniture. ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର
Okay, so next is what? Now, accounting concept are the assumption on which accounting is based upon. So it is having money measurement concept, accounting period concept, accrual concept, business entry concept, going concept, matching concept, dual accept, okay, and relation concept. Okay, money measurement concept state that only those transaction or event are recorded in the accounting which can be expressed in a monetary terms. जोटा कि हमें monetary terms रे convert कर परिबा जहाँ भी transaction है सेटा को आजिबो money measurement concept. Accounting period concept states that the user of the financial statement needs to be periodically reporting to the performance of the business. हमें quarterly देखि परिबा हमर business performance केते weekly basis देखि परिबा monthly yearly basis रे देखि परिबा. The accrual concept state that the expenses revenue incurred for a particular accounting period so reckoned in a same period, irrespective of the fact whether these expenses had been made in the cash or not that in year. ମାନେ ଧର ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲୋକ କଣ କରିବ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କିଣୁଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏ କିଣିଲା 4 wheeler କିଣିଲା ସେ କଣ କଲା ନା ଲୋନ୍ ହିସାବରେ କିଣିଲା बुझे से पेमेंट केते दब डाउन पेमेंट ता देला किंतु आमे बिजनेस केते देखेबा हमर टोटल फुल ता देखे मते से पीरियड भीतर मिलु किबा से ईयर भीतर न मिलु किंतु मु कहबी जे मोर गोटे गाड़ी मु सेल कर ओके business entity concept state that an accounting entity is hold to be separate from the distinct from owner the adre no rahibo a accounting concept re the owner account is different than the business account. Business account or a separate account. Okay, say account through say transaction as and so that what happens? Say, corporate account ଆମେ ଯୋଟା ବନେଇଲେ ତା ଦେହରେ ଆମର टैक्स ଆମେ गेन କରିବୁ କିନ୍ତୁ पर्सनल अकाउंट ସେଟା ଲିଙ୍କ ଅଫ୍ ରହିବ मींस इट इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स एंड सेटू मु मैनेजमेंट करबी कोन एम्प्लॉय मन को पेमेंट देबी किछि जदी एक्सपेंडिचर होला ता देहरे सेटू से अकाउंट रो पेमेंट हो ता देहरे मु कोन पारे देखि परिबी मोर केते लाभ होला मोर बिजनेस ते मु सेटू जानि परिबी बुझिला टैक्स रिटर्न भी सेटू करि परिबी going concept state that it is assumed that the business will exist for an indefinite period of time and transactions are recorded from this point of view. Okay, business का more indefinite period of time चलिए माने that is कहाँ हो ना गोटे सेलिंग गोटे जिनस हमें सेलिंग करूँ छे किंतु हमें कौन कहिबा हमें केबे सेल हो हमें तो जान किंतु that is stock with me किंतु मोर जो लाभ होची किबा जो भी मु किनी की रखुचे तो मो इन्वेस्टमेंट ता मु सेते काउंट करू मु एते का इन्वेस्टमेंट करू बुझला मैचिंग concept that revenue as well as expenses are to be estimated for accounting period irrespective of the actual receipt of cash okay एटा होची मैचिंग concept revenue as well as the expenses are to be estimated मो revenue भी करिबी आ expenses estimate करिबी for that accounting period dual accept concept state that every transaction enter into the firm will have two aspects so that is gonna be the credit rahibo gote debit rahibo realization concept state that revenue should be measured in the period in which it is earned actually तो मु कहबी नि जे जेतबे गाडीटा गोटे सेल होची से मते फुल पेमेंट होनी त से तो मते इंस्टॉलमेंट दो मु कहबी मोर एति टका ही लाभ होईची बिजनेस आ जे पर तो से टका से मते पेड करू बुझी होची जोटा का कहबा हम कोन कहबा बाकी नहीं जीवा जो जिंसटा ओके हमको नहीं तो परे दे दे कि 11 मास रे दे हम जो जिंसटा दिया जाय बिजनेस रे सेटा होची रियलाइजेशन कांसेप्ट किंतु जो पैसा मु पाइबे मु ताको कहबी बिजनेस आ जोरा पाइ नथि मु ताको कहि परिबी बुझी होची so accounting convention refers to the custom tradition used to bring out the uniformity in the maintenance of accounting accounts रे uniformity आनिया पे मते accounting convention दरकार
So a convention कौन रहेगा ना convention of consistency, convention of conservation, convention of disclosure and convention of materiality. এই চারটা ফর্ম রহিব convention of consistency state that organization must follow the consistent accounting practice and policy over the various accounting period বুঝলা consistent format रे मोर accounting information टा मो स्टोर करियो serial number रहला product number रहला से फॉर्मेट मु मेंटेन करि चली माने केते पैसा हला केते टैक्स देले टोटल केते देले टोटल स्टार्टिंग में सेटा मेंटेन करले हमको कंसिस्टेंसी रहिबो convention of conservation state that it is essential that the valuation of financial transaction as reflected in the financial statement is done conservative माने financial statement रे ताको रिफ्लेक्ट करियो जहाँ भी मो ट्रांजैक्शन कर बेले बेले कौन कोई ना बड़ा बिजनेस रे से तांते आगुआ देखि न से स्टेटस कोन नेबे ना तुम्हारा बिजनेस केते बोले तमरे व्यू दो आर मासरे कोन दो से ऑटोमेटिक दे देबे मोर एते टका बिजनेस हो किंतु से बिजनेस हेई नथिबो से कोन कर दिबो देखि जे मु बिजनेस हे ओवर वैल्यूएशन करथिबे किंतु पैसा आसी नथिबो से पैसा रे से कोन करथिबे निज तरफ बुकिंग कर देथिबे देखिबे तोरा मालिक कोन करे गोटे ऑफर दो से माने कोन करे निज हाथ पैसा दे से बैलेंस शीट को सेमते मेंटेन कर दियो जे बहुत सारा इन्वेस्टर्स पण आसे तब कि सेमते न था सब टैक्स होता बुझियो the convention of disclosure state that financial statement must be free from subjective bias and they should be made available early enough to enable the user to take the timely decisions बुझियो जेते कि सपोज तार गोटे कंपनी हमें फ्रैंचाइज नै छै ओके हमें गोटे कंपनी अंडर द बिजनेस करछे से कंपनी भी गोटे एक्सपेक्ट करथो दैट माय प्रोडक्ट शुड बी सेल मु किनी आनी रा फ्रैंचाइज नै करी सो सी भी करिवो जे मोर प्रोडक्ट सेल कले तार से परसेंटेज पाइबो हमें होल्डिंग करी रखबे रहइबो तो हमें ताको कोन कहिथिबो ना हमें जाइथिबो जे हमर एई प्रोडक्ट केबे सेल हो तो मु 15 दिन भीतर केतेटा सेल करि पाइबो चेक करी परको डिस्क्लोज सिको तो सेति पे मु कोन करबी ना मु गोटे एक्सपेक्टेशन रखिथिबि जे मु एई समय 5टा सेलिंग करबी तो मु सेई समय 5टा दाखो ऑर्डर भी करि पाइबी जिंस जे मते एई समय 5टा ऑर्डर हमें रखिता मते दबो ता भीतर मु एक्सपेक्ट करथि गोटे एक्सपेक्टेशन देछि बुझियो जेते कि सपोज हमें कहिबा एई ऑन द टाइम ऑफ कोरोना सो आइसक्रीम ये सब मनेले फॉर द टाइम ऑफ जो बाहागर फाइबर थिला किंतु कोन होला सेटा नष्ट होला से माने एक्सपेक्ट करथले ए समय बेसी सेलिंग हो तो ताको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टा बेसी बढ़ाई तापर कोन होला पूरा टफ हे गेला कमे गेला एबे जेता ओपन होउची से धीरे धीरे एको छाड़ बुझिला जेंति कि हमें गोटे पार्टी फंक्शन हो हमें 2000 3000 लोग को इनवाइट करथले तो सेटा बे लिमिटेड हे तो सी भी तारा प्रोडक्शन भी से अनुसार कमे convention of materiality immaterial transaction should be clocked under the appropriate dates okay immaterial transaction convention just been calculated एवढा सब balance sheet asset लो दरकार नाही एवढा सब immaterial थोड़ा material म्हणजे बिझनेस को नेकी सही करिए हां तो जेंति कि धरा ଗୋଟେ बिझनेस हला धर कि आसिले गेस्ट आसिले so that I give some kind of cold drinks some kind of tea so I am not counted as in the business mo business re tiki invest kari so it is not counted as invest so it is a part of that you consider that you have to maintain okay gote thora diary dala ki gote calendar dala so it is not part of that business bujhe hoche double entry system is a system of recurring transaction in a manner that maintain the equality of accounting equation. It allows to record each transaction as a debit or credit, where every debit has a corresponding credit. Okay, double entry accounting is a system recording of transaction in a manner that maintain the equality of accounting. Accounting का equality का वो रखिए.
Okay, it allow to record each transaction as a debit or credit where every debit has a corresponding credit or vice versa. Okay, that is a double entry system we are using. That this is called as your the following figure shows the double entry system. One is voucher transaction. Okay, then voucher is what? It is a document containing the details of financial transaction. Okay, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଉଚର ବନେଇବା ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଏମ୍ପ୍ଲୟି କାମ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ସାଲାରୀ ଦେବା ଆମେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଉଚର କାଟିବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆସିକି ଆମର ଇଙ୍କ ଭରୁଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଉଚର କାଟାଯାଏ ଯୋଉଟା ତ ସର୍ଭିସେସ୍ ରହିବ that is a document containing the details of the financial transaction. The first we store the voucher transaction. The voucher transaction is stored in a primary book register cash purchase and sales. It is store of a na ledger. Okay, so ledger is a book in which all the accounts are maintained. बुझियला purchase ହେଲା sales ହେଲା maintain ledger it one. So in this ledger you have different account like real account, personal account, nominal account for capital nature, nominal account in revenue nature. Capital means जोटा मु मेन जिनसटा मु इन्वेस्ट करी कैपिटल बुझियली रेवेन्यू नेचर हैला जोटा हमर लॉस प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होला सेटा देखाओ सेटा कोठी रहइबो ना ये टोटल ट्रायल बैलेंस अंडर रे रहइबो ए ट्रायल बैलेंस कोन रहइबो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ए टोटल रहइबो बैलेंस शीट अंडर रे एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बैलेंस बुझियला ए फिगरटा now what is the actually debit and credit means in the real account, personal account and nominal account. Debit means in real account what comes in personal account the receiver, in nominal account it is a expenses or losses. Okay, nominal account means what you are giving money to what to employee the committee को कल loss को expenses गला personal account means you are receiver. Okay, real account which comes in credit means what goes out. Okay, personal account रे हबो the giver, nominal account जे employee ला से gain कर बुझिला. तो journal is a what? Journal is a book in which business transactions are entered in a chronological order. Okay, in there, but step by step you have to enter. Records in a single transaction are journal entry. It supports a journal entry by a voucher evidencing the related transaction. हमें जो भी transaction करेगा voucher सब entry करेगा. तारा सब evidence इधर रहेगा. So voucher is a document containing the details of financial transaction including sales invoices, purchase invoice, pay slip, rent receipt. Okay, so that you are giving in a voucher. Okay, it is लिखी है voucher heading देते हैं. Voucher का लिखा है. It is a document containing the details of a financial transaction. Example, it includes sales invoice,
purchase invoice, pay slip, then next is rent receipt, maintain document ହିସାବରେ ଗୋଟେ PhD ମାନେ also payment ଦେବାର ଥିବ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାର ଥିବ ସେଟାକୁ ଭାଉଚର କହିବେ। Posting is the process by which the information about the transaction is transferred or moved to an account. Okay, जेमति कि आमे बैंक रे फेसबुक रे फोटो अपलोड करूचे जे पर्यंत आमे ताको पब्लिश न करी जे से पर्यंत से कागो बुझी गलो। Posting is just like that. I am giving a money to the bank, but bank is not operated on posting. So till that it is not reflecting to you. So it is a process by which information about a transaction is transferred or moved to an account. Next is accounting period. It is a regular period of time, such as a quarter or a year, for which financial statement is generated. हमें quarterly use कर पाएंगे, monthly हमें use कर पाएंगे. So right, what is ledger? Ledger is the book in which all accounts are maintained. A chart of accounts is a list of all accounts accounts titles used by the organization. Titles used by the organization. Okay, so now comes to the next part. What is the trial balance? It is a list of all balances of ledger account. Okay, is prepared after making all the adjustment entry in the journal. जहाँ भी सब adjustment हमें थी वो credit debit रे हमें करियो adjustment एडी करियो. Posting to the journal entry to the ledger, balancing the ledger account. It is the sum of balances of, you can balance your real account, personal account, and nominal account. It has a columns for account name,
debit balance, and credit balance. Okay, so trial balance contain the three columns. One is your account name, then what is your debit balance and credit balance. Okay, dita ko part karo jemti amara bank रे भी जेतेबेले हमें पासबुक टा प्रिंट करूचे से रहउचे अकाउंट नेम को हेड रे हमें ताको ट्रांजैक्शन करूचे गोटे डेबिट कॉलम रहउचे गोटे क्रेडिट कॉलम रहउचे. The financial statement is classified into the two level. Okay, the financial statement is a report that form the accounting record of a company to find the financial performance or status of a business for a specific period. आमे जेतल देखु जे शेयर मार्केट रे जेतल हम पैसा लगाउचे तो से आमे देखु जे तार प्रीवियस परफॉर्मेंस कोन रहउचे पर्टिकुलर क्वार्टर रे कोन रहउचे वीकली कोन परफॉर्मेंस रहउचे तो से जोगा पैसा रहउचे. So the financial statement include profit and loss statement, the balance sheet, and cash flow statement. Okay, there are usually compiled on. You can get this financial statement quarterly, half yearly, or in yearly basis. The profit and loss account is divided into one is trading account where you purchase your share holding, and another is profit and loss account. Okay, the profit and loss statement is classified into two levels. One is gross profit, which is calculated as net sales minus cost of sales. Okay, so you have to minus it, net sales minus cost of sales. Next is net profit is calculated as gross profit plus other incomes. Other incomes माने suppose मु गोटे सर्विस सेंटर माने एठी गाड़ी बिकुची as well as मु सर्विस दोची तो सर्विस रे भी also I am getting the money for that minus selling and administrative expenses, depreciation, interest, tax and other expenses. The total टा minus हेले मु पाइबी कोन ना नेट प्रॉफिट टा पाइबी. बुझला? Now comes to your tally ERP9. Okay. So before that you write what is that trading account. Give some heading trading account. It is trading account is prepared to arrive at the gross profit earned by the organization. Over a specific period. This helps the organization to arrive at the cost of its core activity. And calculate the direct profit from its operation.
Then next is profit and loss account. That is the profit and loss account. It gives the net profit earned or loss, earned or loss incurred by the company, incurred by the company after considering all other incomes and expenses incurred over a period. তারপর heading the balance sheet. It is a statement that summarizes it is a statement that summarizes the asset and liability of a business. The excess of asset over liability is the net worth business. It provides information. It provides information that helps in accessing first point long-term financial strength. তারপরে efficient day to day working capital management, then asset portfolio, sustainable long-term performance.
Okay. So Tally ERP 9 is a accounting software that undertake accounting in a simple way. So it is a leading accounting package. It has no accounting code. If you maintain your accounts with Excel, you have to remember the formula. But here, there is no requirement of formula. You have to only know where to enter. Okay, and what is your type of account, so that you have to insert in the particular category. Okay, it has no accounting code. It is a complete business solution. It can be integrated and non-integrated accounting and inventory. If you only maintain your accounts, only what comes in, what goes out, and to maintain what is your transaction is happen day by day, you can only handle the account. And there is a inventory system is also present. So where you handle your inventory management system also. Inventory माने होची कोन मोर केते माल आसिला केते रहिला स्टॉक ता तापरे पीओएस मु करि परिबी बिलिंग स्कैन करके भी टैली को बाहर करि परिबी बिलिंग गुडा so it can be integrated and non-integrated accounting and inventory. It is a flexible and easy to use, is very speedy. It allow to maintain the multiple company at a time of multiple company को handle करते हैं. Okay. It provide a unlimited level of classification and grouping capability. किसी group अच्छी predefined groups अच्छी tally रे आउ किसी groups तमें निजे निजे भी बने परिबो. Okay, so निजे निजे भी किसी group बने परिबो based upon your requirements. It has concurrent and multilingual flexibility. Concurrent and multilingual flexibility माने कोन ना different language it support करिवो. ओडिया छाडी के आउ सब अछि ने इंग्लिश कर परिबा ने different गुजराती सब अछि इंस्टॉलेशन टाइम ना रखि परिबा. It has real time processing. हमें सर्वर रे गोटे तर टैली सॉफ्टवेयर हमें सर्वर रे लोड करिबा तर क्लाइंट रे भी जहा करिवो मालिक बसी देख परिबो कोन ट्रांजैक्शन बुझे तुम गोटे सर्वर रे पकाई दियो तो मल्टीपल क्लाइंट रिमोट रे चले सर्वर रे तार आईपी एड्रेस रे से एक्सेस करियो सेटा रे कम पैसा पड़े माने ते गोटे किले 25000 एटा गोटे किले से 20000 टका होजने हम से ऑनलाइन कर दलो एटी ऑनलाइन रिमोट एक्सेस करके सेठी हम खाली बिलिंग परमिशन देछु गोटे जो मामले अछि जे बिलिंग माने सेटा सेल करबो. अच्छा हां पर सेटा भी से अलाउ करे एटी तो काम में किछि एटी खाली सेल करले से पड़ जाय करते. Okay, so it is a versatile multi-platform availability. सब प्लेटफॉर्म रे हमें काम करि परिबो. It provide online help जदि किछि प्रॉब्लम होला तमे डायरेक्टली ऑनलाइन हेल्प कर परिबो. It offer the editors edition. Okay, editors भी रेडी रही परिबो. तो बेसिकली एटा कंप्लीट अकाउंटिंग पैकेज एटा रहइबो. आवर बैकअप भी तमे नै परिबो. कंपनी रो बैकअप नै परिबो. जदि कोनोसी करप्ट हैला ताको इंपोर्ट करिवो गोटे फाइल पुनी आ गोटे जगह नै परिबो से फाइल. That is simple and rapid installation and ultimate multi-user support, internal backup and restore, data reliability. सब जगह में डाटा नहीं परिबा. यूजर डिफाइंड सिक्योरिटी लेवल तबे पासवर्ड दे ग्रांटेड करले से यूजर खोली परिबो. टैली ऑडिट करि परिबो. vault is the another technology of tally ने एटा ऑडिट रे जीवो. Removal of data into separate company, multi-directory for company management, import and export of data. धर आ गोटे कंपनी रे तम ब्रांच रे के काम करूची तारा इंफॉर्मेशन ताके तम आनी कि तम मशीन ने इंपोर्ट कर परियो. टैली सिंक्रोनाइजेशन
टाली रे जहाँ इनफॉरमेशन स्टोर करूछो तुम कहबो नाही मु गोटे सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर गोटे मगेबी ता भीतर मोर सब जगह इंस्टॉलेशन करबी एटी सिंक्रोनाइजेशन भी करि परबो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ डाटा केते सेल्स हला देखि पारे ग्राफिकल ओडीबीसी कंप्लेंट जोटा हम कहथले हम डेटाबेस रे स्टोर करि परिबो प्रोटोकॉल सपोर्ट सेंड करि परिबा गोटे जगह रो गोटे जगह डाटा प्रोटोकॉल मींस इट इज कॉल्ड एज द मैसेंजर डायरेक्ट वेब ब्राउजर एक्सेस ability to preview and publish the report टा publish करिया पर मो प्रीव्यू कर परिबे ईमेल फैसिलिटी रिपोर्ट टा को ईमेल कर परिबे से जो इंटरनेट परचेस है से अपन डायरेक्ट मोबाइल से कनेक्ट करके मैसेज करियो मोबाइल ईमेल रे कर परिबे मेल फैसिलिटी मेल ले कर परिबे एक्सेल ले कर परिबे बुझियो नहीं गोटे तरह परचेस किएला से जो नंबरटा सेव कर से ग्रुप मैसेज करो ना सेम दो सेटा सॉफ्टवेयर बनै पड़े तुम्हें जोटा यूज कर छु भाबो तुम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करो बेटर और मैसेज जाला थैंक यू कम्स अगेन विजिट अगेन इन कोई मेथी परचेस है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करो वो यूज करने स्टार्ट करना यूज करो नेचुरल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जल्दी यूज करिवो मैं रादर देन द टैब मसेला এটা अपग्रेड देखियो এটা নাই एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होछ এটা कम खर्च रे हो वंस इम्प्लीमेंटेशन এটা तुमको रिन्यूअल करियो पड़ो टैली टा तुमको रिन्यूअल करियो पड़ो वर्ष এটা रिन्यूअल करा सेरा को सॉफ्टवेयर जे कोन से तुम गोटे कंपनी से सॉफ्टवेयर टाइप करिए बिल्ड करियो पड़ो से अकाउंट के बने दो तुम रिक्वायरमेंट टा कह दो से बिल्ड अप कर दे बस वन इंस्टॉल सही उसी तरह मेंटेन करियो पॉइंट ऑफ सेलर सेलिंग करियो बिल बाहर कर पाइबो रिमोट एक्सेस कर पाइबो कंट्रोल सेंटर सपोर्ट सेंटर ओके सो दीज आर द फैसिलिटीज आर अवेलेबल एटा था ए फीचर गुडा